हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एडवांस वोकैब्युलरी। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा यूज एडवांस वर्ड्स इन डेली कन्वर्जेशन, रिप्लेस बेसिक वर्ड्स विथ स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी, अंडरस्टैंड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो सीखेंगे, क्रिएट नेचर और सेंटेंस सीखेंगे, स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली। आज ये सारा हम आज सीखने वाले हैं। तो बेसिक एडवांस वोकैब्युलरी में हैप्पी, हैप्पी को एडवांस वर्ड डिलाइट, डिलाइटेड मीनिंग होता है वेरी हैप्पी। एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट। इसको एडवांस आप कैसे बोल सकते हो? आई एम डिलाइटेड विथ माई रिजल्ट। डिलाइटेड, आपको हैप्पी का एडवांस वर्ड क्या है? डिलाइटेड। आपको याद करना है मेरे साथ। सैड, miserable, miserable, very sad. He feels sad today. He feels sad today. ये बेसिक जो हम बोलते रहते हैं, पर एडवांस में कैसे बोलना है? He feels miserable today. तो ये एडवांस वर्ड है। बिग, enormous, very large. We saw a big building. अब we saw a enormous building. तो इसका ये एडवांस प्रोनाउंसिएशन है। अब स्मॉल, टीनी, टीनी मतलब हम समझते हैं कि स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। द बॉक्स इज स्मॉल, द बॉक्स इज टीनी, ये भूल सकते हो आप। इंपॉर्टेंट, crucial, very important. This is an important message. जब हम बोलते हैं तो इसको एडवांस में, मीटिंग में, ऑफिस में आप बोल सकते हो, this is a crucial message. Smart, intelligent, quick to understand, मीनिंग इसका होता है she is a smart girl. स्मार्ट की जगह अब हमको यूज करना है she is an intelligent girl. Difficult, challenging, not easy. This task is difficult. This task is challenging. तो आपको डिफिकल्ट जब भी होगा तो आपको चैलेंजिंग वर्ड यूज करना है। इजी, effortless, very easy. The test was easy. The test was effortless. Help, assist, support someone. Can you help me? Can you assist me? कितना अच्छा लगता है ना? Can you help me की जगह आप can you assist me बोलना। Improve, enhance, make better. We need to improve our skill. We need to enhance our skill. हमने एडवांस इंग्लिश का मीनिंग देखा था। अब एडवांस वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। एप्रिसिएट, वैल्यू समथिंग, आई रियली एप्रिसिएट योर हेल्प। Recommended, suggest, I would like to recommend this book to you. Prefer, I like one thing more. I prefer tea over coffee. Require, need, this job requires hard work and dedication. Avoid, stay away from, you should avoid eating junk food. Obtain, get, you can obtain more information from the website. Consider, think carefully about, please consider my suggestion. अब हम obtain की बात कर रहे थे। You can obtain more information from the website. तो obtain मतलब get भी होता है बच्चों, पर ऑप्टेन का वर्ड ऐसे यूज करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब कंसिडर क्या देख लो, थिंक केयरफुली अबाउट, थिंक केयरफुली अबाउट, इससे अच्छा प्लीज कंसिडर माय सजेशन। मेंशन, टॉक अबाउट ब्रीफली, ही मेंशन योर नेम इन द मीटिंग। तो ये एडवांस वर्ड है बच्चों, जो बेसिकली अभी की एडवांस इंग्लिश में आना ही चाहिए।
प्रोफेशनली वोकेबलरी में अब देखते हैं इनिशिएटिव मतलब एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली. शी सो ग्रेट इनिशिएट बाय लीडिंग द प्रोजेक्ट. Efficient, working effectively without wasting time. Our team is very efficient in completing tasks. Productivity, producing good result. It was a productive meeting with many new ideas. Reliable, dependent and trustworthy. He is a reliable person and always keep his promise. Innovative, introducing new idea. The company is known for its innovative solution. Significant, important or considerable. This achievement is a significant milestone for our team. Collaborate, work together with others. We need to collaborate to achieve our goal. Accomplish, successfully complete something. With hard work, we can accomplish anything. ये सब बच्चों प्रोफेशनली वोकेबलरी है जो हमको डेली लाइफ में ये आना चाहिए, इसका यूज करना ये सारे वर्ड्स के. तो रिप्लेस बेसिक एक्सप्रेशन. आई थिंक दिस इज गुड. आई थिंक दिस इज गुड. ये जो हम बेसिकली बोलते हैं आई थिंक दिस इज गुड, उसकी जगह हमको बोलना है आई बिलीव दिस इज बेनिफिशियल. I believe this is beneficial. We need to face the problem. अब इसकी जगह हमको ये बोलना है we need to resolve the problem, the issue. Replace basic expression. She helped me. She assisted me. This is very important. Very important का हमने देखा था this is crucial. तो आपको ये बेसिक की जगह आपको रिप्लेस करना है विथ एडवांस इंग्लिश के साथ, वोकेबलरी के साथ, आपके एक्सप्रेशन के साथ. द बेटर वर्ड बिगर इम्पैक्ट. एडवांस वोकेबलरी में इन कन्वर्जेशन में हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन. It was quite challenging, but I managed to accomplish my objective. तो बच्चों चैलेंजिंग का यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, accomplish का मतलब सक्सेसफुली completed होता है. अब कन्वर्जेशन 2 देखते हैं. What do you think about the new process? I believe it will significantly enhance our productivity. तो significant का मतलब होता है in an important वे. एनहांस का मतलब होता है इम्प्रूव अवर मेक बेटर. तो क्वेट का मतलब होता है टू ए फेयरली लार्ज डिग्री. मैनेज का मतलब होता है वी एबल टू डू समथिंग. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल और टारगेट. बिलीव का मतलब होता है टू हैव कॉन्फिडेंस इन. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है हाउ मच वर्क इज डन इन ए गिवन टाइम. तो बच्चों फ्रेंड्स यही बोलूंगी प्रैक्टिस दिस कन्वर्जेशन डेली एंड स्पीक लाइक अ प्रोफेशनली. प्रैक्टिस एक्टिविटी में आपको चूज द करेक्ट एडवांस वर्ड करना है. वी नीड टू डैश दिस इशू इमीडिएटली. इसकी जगह क्या करोगे आप रिसॉल्व या फिक्स. आपको चॉइस करके मुझे बताना है कि इसमें क्या करना है. The new system will dash productivity. She is very dash and always completes her work on time. This is a dash decision for our future. We should dash with other team to achieve better result. तो बच्चों इसमें बेसिक इंग्लिश भी है और एडवांस इंग्लिश भी है. आज के प्रैक्टिस के आज हमने देखा उससे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. तो वी मस्ट डैश दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अवर
business. His presentation was very dash and well structured. The company has a strong dash for customer satisfaction. He solved great dash by solving the problem quickly. This is a dash tip towards achieving our goal. We should dash our resources wisely. The teacher gave a dash explanation of the topic. Teamwork and dash are की टू सक्सेस. अब ये वर्ल्ड बैंक में इतने सारे एडवांस इंग्लिश है जो इसके अंदर आएंगे. आप प्रैक्टिस करो, देखो कौन से वर्ड इसमें आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. अब समरी के लिए इतना ही बोलूंगी कि अब बेसिक एक्सप्रेशन से एडवांस एक्सप्रेशन हमको सीखना है. द आई थिंक इज गुड उसकी जगह आई बिलीव दिस is a beneficially. We need to fix the problem. We need to resolve the issue. She helped me. She assisted me. This is very important. This is crucial. We will finish it soon. We will complete it shortly. I am very tired. I am completely exhausted. तो बच्चों आप की पॉइंट यही बोलूंगी. कॉन्फिडेंट यू, सक्सेसफुल you. Daily practice better communication. Thank you for watching Daily English with Asha. Please like and subscribe.